excretory products and their elimination, chapter 19. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc., either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you will learn the mechanism of the elimination of these substances with a special emphasis on the common nitrogenous wastes. Ammonia, urea, and the uric acid are the major forms of nitrogenous wastes excreted by the animals. Are the major form of nitrogenous wastes excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with the minimum loss of water. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, even water, and ions. Ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, and even water, and ions like sodium, potassium, calcium, chlorine, chlorine, phosphate, sulfate, etc., either by metabolic activities or by other means like excess ingestion, either by metabolic activities or by other processes like excessive ingestion. These substances have to be removed totally or partially. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, we learn the mechanism of the elimination of these substances with a special emphasis on the common nitrogenous wastes. Ammonia, urea, and the uric acid are the common nitrogenous wastes excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and requires a large amount of water for its elimination. Uric acid, being the least toxic, requires a minimum loss of water. Requires minimum water for its elimination. Therefore, the most toxic form is ammonia, followed by urea and then the uric acid. Urea followed most toxic form is ammonia, urea, and then the uric acid. Ammonia requires large amount of water for its elimination. Uric acid requires least amount of water for its elimination. The process of excreting ammonia is called ammonotelism. Many bony fishes, aquatic amphibians, and aquatic insects. Many bony fishes, aquatic amphibians, and the aquatic insects are monotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across the body surface or through the gill surface. Ammonia. The process of excreting ammonia is called ammonotelism. Many bony fishes, that is ostracids, aquatic amphibians, many bony fishes, aquatic amphibians, and the aquatic insects are monotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted out by diffusion across the body surface or through gill surface. Is generally excreted out through diffusion across the body surfaces or through gill surfaces, as in fishes. As ammonium ions, kidneys do not play any significant role in this. Therefore, that is, kidney का कोई role नहीं होता है in the elimination of ammonia. Kidneys do not play any significant role in its removal. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid for the conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians, वहाँ पे थे aquatic amphibians, यहाँ पे terrestrial amphibians, and marine fishes. Mammals, many terrestrial amphibians and the marine fishes वहाँ पे थे aquatic insects, bony fish यहाँ पे है marine fishes, mainly excrete urea and are called ureotelic animals. Ammonia produced by these metabolism is converted into ureotelic animals में भी ammonia produce होता है, लेकिन वो ammonia फिर convert किया जाता है in the urea. Ammonia produced by the metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals. Some of the urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. Reptiles, birds, land snails, and simple insects. Reptiles, birds, land snails, and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with minimum loss of water and are called uricotelic animals. The process of excreting ammonia is called ammonotelism. Many bony fishes, aquatic amphibians, and the aquatic insects are ammonotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted through diffusion along the body surface or through the gill surface. Kidneys do not play any significant role in its removal. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and the uric acid for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians, and the marine fishes mainly excrete urea and are ureotelic animals. Ammonia produced by the metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out through kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix
of some of these animals to maintain a desired osmolarity. Reptiles, birds, land snails, and insects. Reptiles, birds, land snails, and insects. Reptiles, birds, land snails, and insects excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotilic animals. Ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and is like either by the metabolic activities or by excessive ingestion. These fish had to be totally or partially removed into the ammonia, urea, and the uric acid of the major nerve form which excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form, and urea is requires large amount of water, and is the uric acid is the least toxic form and requires the minimum loss of water. The process of excreting ammonia is called ammonotalism. Many bony fishes, aquatic amphibians, and the aquatic insects are ammonotelic in nature. Ammonia, as it is readily solved, generally excreted by diffusion across the body surface of the gill surface. Kidney do not play any significant role in industrial molecular adaptation, necessitated the production of the lesser toxic nitrogenous wastes like urea, lesser toxic nitrogenous wastes like urea, and the uric acid for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians, and the marine fishes. Many terrestrial amphibians, and the marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. Ammonia produced by the metabolism is converted in the urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidney. Some amount of urea may be retained in the matrix of these animals to maintain a desired osmolarity. Reptiles, birds, land snails, and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimal loss of water and are uricotelic animals. A survey of the animal kingdom presents a variety of the excretory structures. In most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia are also called flame cells, are the excretory structures in the platyhelminthes. Example: flatworms, Planary, rotiforus, some annelids, and the cephalochordates, amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation, that is osmoregulation. That is primarily concerned with primary function जो होता है flame cells, या we can say that protonephritic उनका primary function होता है osmoregulation and the secondary function होता है excretion का. Primarily यहाँ पे लिखा है text book में primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia are the tubular structures of Protonephridia are also called flame cells, are the excretory structures in platyhelminthes. Example: flatworms, planary, rotiforus, some annelids, platyhelminthes, rotiforus, some annelids, and the cephalochordata, that is amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia, second one is Nephridia are the tubular structures of earthworms and other annelids. Nephridia are the tubular structures. Some annelids में होता है protonephridia. Majority of annelids have nephridia as the excretory organ. Nephridia help to remove the nitrogen waste and maintain fluid. Nephridia भी help करता है first in the osmoregulation and then the excretion. Nephridia also help to remove the malphizian tubules are the excretory structures of the insects including the cockroach insects, that is arthropoda में malphizian tubules होते हैं, excretory structure होते हैं. Example cockroach में malphizian tubules help in the removal of wastes and osmoregulation. Antennal glands or the green glands perform the excretory function in crustaceans like prawns. Antennal glands or the green glands. Antennal glands are also called as green glands. Glands perform the excretory function in crustaceans like prawns. Phereas the protonephridia is found in platyhelminthes, rotiforus, some annelida, and the cephalochordata. Protonephridia helps in the osmoregulation and the excretion. Second is nephridia. Nephridia are also the tubular structures found in many annelids, found in earthworms and the other annelids. Nephridia help to remove the Nephridia also helps in the osmoregulation and the excretion. The third is morphine tubules, the excretory structures of the insects including the cockroach, and the last one is antennal glands or the preen glands, not green glands. It is green glands, not preen glands. Green glands, antennal glands or green glands are the excretory structures in the crustaceans like prawns. Invertebrates में होते हैं सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, वैर वर्टिब्रेट्स में होते हैं कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, वर्टिब्रेट्स में होते हैं कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज किडीज. Some of the protonephridia or the flame cells are the platyhelminthes, rotiforus, some annelids, and the cephalochordata primarily concerned with this. Second one is nephridia are the tubules found earthworms, and the third one is malphizian tubules found in the insects, and the fourth one is antennal gland or the preen glands.
is the third one, and the fourth one is adrenal gland or green glands. Green glands, sorry, adrenal glands or the green glands are the excretory structures in the crustaceans like prawns. Human excretory system. In humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, फिर है एक urinary bladder and then urethra. A pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and then urethra, a urinary bladder and then urethra. A pair of kidneys, a pair of kidneys, a pair of kidneys, a pair of ureters, and then the urinary bladder and single urethra. In humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureters, one pair of kidneys, one pair of ureters, a urinary bladder and a urethra, a urinary bladder and a urethra. Kidneys are a reddish brown bean-shaped structures. These are reddish brown bean-shaped structures situated between the level of the last thoracic, that is thoracic, 12th thoracic, last thoracic means 12th thoracic, and the third lumbar, Kidneys are the broad bean-shaped reddish brown bean-shaped structures situated between the levels of the last thoracic T12 and the third lumbar, last thoracic and the third lumbar, very close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. These are present dorsally. Kidneys are present dorsally. Present close to the inner wall, of abdominal cavity. Inner wall. Kidneys are located on the dorsal side of the abdominal cavity, close to inner wall. Their location. First, kidneys का shape होता है bean shaped. कहाँ पे locate होते हैं? Between the last thoracic and the third lumbar, and towards the inner wall of the abdominal cavity. Each kidney of adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 12, 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeter in thickness. पहले है 2 to 3 centimeter, फिर है 5 to 7 centimeter, लास्ट में है 10 to 12 centimeter. पहले है 2 to 3 centimeter in thickness, then 5 to 7 centimeter in width, and last में है 10 to 12 centimeter in length. TWL 2 3 5, फिर 4 6 फिर 5 फिर 6 to 7 10 to 12 length, 2 to 3 centimeter thickness, 5 to 7 centimeter width, 10 to 12 centimeter length, 10 to 12 centimeter length. With an average weight of 120 to 170 gram, the average weight of each kidney is 120 to 170 gram. The average weight of each kidney is 120 to 170 gram. 120 to 170 gram. The average weight of each kidney is 120 to 170 gram. 120 to 170 gram. Towards the center of the inner. पहले यहाँ तक पढ़ेंगे फिर से. Humans में होते हैं a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and the urethra, Each kidney is bean shaped. हर एक kidney bean shaped होती है. Reddish brown bean shaped, located between the last thoracic and the third lumbar. That is 12th thoracic and the third lumbar. Present on the dorsal side of inner abdominal cavity. Inner abdominal wall जो होता है abdominal cavity में होते हैं, inner wall के नज़दीक होता है on the dorsal side. This is the location. हर एक किडनी की थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ एंड 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ. A pair of kidneys, a pair of ureters, aiding in the bladder and the urethra. Kidneys are reddish brown bean-shaped structures situated between the last thoracic and the third lumbar, close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. Each kidney is 10 to 12 centimeter length, 5 to 7 centimeter width, 2 to 3 centimeter thickness, with an average weight of 120 to 170 gram. Towards the center of the inner surface of the inner concave surface of the kidney is a notch called the hilum. यहाँ पे जो towards the center of the kidney, कहाँ पे concave surface पे is a notch called the, अगर यहाँ पे किडनी की जो concave surface है, inner side of concave surface, is a notch called hilum, through which ureter, blood vessels and the nerves enter. Ureter, blood vessels and the nerves enter. Ureter भी वही से enter होता है. Therefore towards the inner surface side के पास होता है. Towards the inner center of the inner concave surface of the kidney is a notch called a hilum, through which the ureter, blood vessels and the nerves enter. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis. Hilum के अंदर होती है एक funnel-shaped space that is called as renal pelvis. Which with projections called calyces. उस renal pelvis पे होते हैं कुछ projections, उन projections को कहते हैं calyces. Therefore जब हम kidney में जाते हैं through the concave side से जब जाते हैं kidney, तो inner side पे पहले आता है hilum फिर के बाद आता है एक फाइनल शेप, उसको कहते हैं रिनल पेल्विस पे होते हैं प्रोजेक्शन जिनको हम कैलाइसिस कहते हैं. द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ कैप्सूल.
आउटर लेयर जो किडनी का होता है दैट इज नॉट स्मूथ बट इट इज स्टफ कैप्सूल. इनसाइड द किडनी दो रीजन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. जो मेडुला होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी pyramids. वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी pyramids. The medullary is divided into conical masses called medullary pyramids projecting into the calyces. वो calyces के बीच में प्रेजेंट होता है. द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इनटू द बिटवीन मेडुला के जो मेडुलरी pyramids होते हैं उनके दरमियान होता है कॉर्टेक्स प्रेजेंट, जिनको हम कहते हैं columns of botany. Therefore columns of botany are the extensions of the cortex or the extensions of cortex in between the medullary pyramids. In between the medullary pyramids towards the center of the inner concave surface of the each kidney is a notch called hilum, through which the blood vessels nerves and the ureter enter होते हैं वहीं से. ठीक है. Inner to the hilum is a funnel-shaped space called as the renal pelvis with the projections called as the calyces. The outer surface of the kidney, the outer layer of the kidney is tough capsule. On the inner side, the kidney is divided into two zones: outer cortex and inner medulla. 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 The medulla is thrown into conical masses called as medullary pyramids. The medulla is thrown into conical masses called medullary pyramids, projected into the calyces, the cortex. Towards the center of the concave surface of the each kidney is a notch called hilum. Through which the ureter blood vessels and the concave surface. याद रखना है, एग्जाम में डाल सकता है कॉन्वेक्स सरफेस, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव सरफेस, फिर यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स एंटर, सारी एंटर होते हैं. उसके बाद है फनल शेप्ड स्पेस. इट इज नथिंग बट इट्स अ स्पेस रिनल पेल्विस. उस पर होते हैं प्रोजेक्शंस, उनको कैलाइसिस कहते हैं. आउटर लेयर होती है, इट इज़ नॉट स्मूथ बट इट इज टफ, ये याद रखना है. इनसाइड द किडनी देयर आर आउटर कॉर्टेक्स एंड इन द मिडल, ये याद है, ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है. द मिडल इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मास कॉल्ड मेडुलरी pyramids. मेडुलरी pyramids कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं एक्चुअली. मेडुलरी pyramid इज नथिंग, इट इज जस्ट medulla होता है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ conical masses. The cortex extends in between the bases of the medullary pyramids as columns called as columns of botany. Therefore columns of botany are the extensions of the cortex, in between the bases of the medullary pyramids. Each kidney has nearly 1 million. ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि टेक्स्ट पे लिखा है nearly 1 million, 2 million भी लिख सकता है वहाँ पे. Complex, not simple, but it is complex tubular structures called the nephrons, which are functional units. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures. Complex tubular structures called the nephrons, which are the functional units of kidney. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Glomerulus is a tuft. Glomerulus is nothing, it is a capillary. It is a tuft of capillary. It is a basket of capillaries formed by the afferent arteriole, which is itself a branch of renal artery. Renal artery से निकलता है एफेरेंट आर्टरियोल से एक बंच ऑफ कैपिलरी निकलता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. Glomerulus is nothing, it is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, which is itself a branch of the renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by the afferent arteriole. फिर glomerulus की तरफ जो ब्लड लाता है उसको हम afferent arteriole कहते हैं. उसके जो फिर मतलब उससे दूर जो ब्लड ले जाता है दैट इज afferent arteriole. Efferent, E से exit, efferent. The renal tubule. Each nephron के पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, glomerulus and the renal tubule. Glomerulus किससे बनता है? Glomerulus is the tuft of the capillaries formed by the afferent arteriole. फिर glomerulus से ब्लड लेती है कौन? Efferent arteriole. Afferent arteriole बनती है from the renal artery. The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called the Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus, along with the Bowman's capsule, is called as a Malpighian body or the renal corpuscle. जो renal tubule होता है second part of nephron, वो जो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक बनाते हैं, ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी वो स्टार्ट होता है, दैट इज द Bowman's capsule. Bowman's capsule is a part of a renal tubule. Bowman's capsule plus glomerulus is called as Malpighian body or renal corpuscle.
is also called as Malpighian body or renal corpuscle. The tubule continues for the root. The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called the Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus, along with the Bowman's capsule, is called the Malpighian body or the renal corpuscle. Is called the Malpighian body or the renal corpuscle. Is called Malpighian body or renal corpuscle. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called as nephron, which is the functional unit. Each nephron has two parts, glomerulus and the renal tubule. Glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arteriole. Renal tubule is formed by the double-walled cup-like structure called as the Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Bowman's capsule plus glomerulus, collectively called as Malpighian body or renal corpuscle. बहुत आसान है, आराम से. The functional unit is each glomerulus and the renal tubule. Tuft of the capillaries formed by the afferent artery, the renal tubule, the double-walled cup-like structure called as the Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Along with the capsule is called as Malpighian body or the renal corpuscle. The tubule continues further from a highly tubule. renal tubule का second part जो होता है, that is called as the proximal convoluted tubule. The tubule continues further to form a highly coiled proximal convoluted tubule, PCT. A hairpin shaped structure called as the Henle loop is the next part of the tubule, which has the descending limb and ascending limb. The ascending limb continues as another highly coiled tubular portion called as the distal convoluted tubule. The DCT of the many nephrons open into a straight tube called as the collecting duct. DCT of many nephrons. Therefore, collecting duct एक nephron का नहीं होता है. Collecting duct is not a part of single nephron. DCT, distal convoluted tubules of many nephrons open into the collecting duct, many of which conversion open into the. फिर यही collecting duct फिर converge होते हैं, फिर open होते हैं in the renal pelvis, जो हमने पढ़ा था पहले ही, funnel shaped space होते हैं through the medullary pyramid in the calyces, through the medullary pyramids in the calyces. पहला part जो renal tubule का होता है, that is called as Bowman's capsule. The second part is proximal convoluted tubule. The third part is the descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle. फिर बनाता है distal convoluted tubule. Distal convoluted tubules of many nephrons, बहुत सारे nephrons के जो distal convoluted tubules होते हैं वो open होते हैं in a collecting duct. वो open होते हैं collecting duct में. फिर collecting duct converge होके open होता है into the renal pelvis through the medullary pyramids in the calyces. Therefore, collecting duct is not a part of single nephron, क्योंकि बहुत सारे DCTs होते हैं open into a single collecting duct. इसलिए the Malpighian corpuscle थे, उसको कहते हैं Malpighian corpuscle या Malpighian body or renal corpuscle. PCT and the DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle is dips into the medulla. In majority of the nephrons, the loop of Henle is too short. Majority of nephrons में loop of Henle जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो ज़्यादा emerge नहीं हुआ होता है into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. Therefore, cortical nephrons are major in number. Cortical nephrons majority में होते हैं. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. Juxtamedullary nephrons उन nephrons को कहते हैं जिनमें medulla बहुत लंबा होता है और वो ज़्यादा ही dip होता है into the medulla. कम बहुत ज़्यादा nephrons में. Major nephrons are cortical nephrons. Cortical nephrons में जो लूप ऑफ Henle होता है वो छोटा होता है, वो ज़्यादा डिप नहीं हुआ होता है इन द मेडुला. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ Henle ज़्यादा लंबा होता है और वो ज़्यादा डिप हुआ होता है इन द मेडुला. द एफेरेंट आर्टरियोल जो कहाँ से निकल, एफेरेंट आर्टरियोल जो हमने पहले पढ़ा, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेती है, दैट इज एफेरेंट आर्टरियोल. इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म द फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. जैसे ग्लोमेरुलस के नीचे जो कैपिलरीज होते हैं उनको कहते हैं बोवेनस कैप्सूल. बोमेनस कैप्सूल के ऊपर जो कैपिलरीज होते हैं उनको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस. बोमेनस कैप्सूल के ऊपर जो होते हैं उनको कहते हैं ग्लोमेरुलस. इसी तरह जो बाकी पार्ट्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द भी एक कैपिलरी सिस्टम होता है. जो कैपिलरी सिस्टम बनता है फ्रॉम द एफेरेंट आर्टरियोल, उस कैपिलरी सिस्टम को कहते हैं हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम का एक कैपिलरी या एक पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टा जो प्रेजेंट होता है अराउंड द लूप ऑफ Henle. यू शेप्ड होता है वासा रेक्टा. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. और मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जो लूप ऑफ Henle होता है वो छोटा होता है, वो ज़्यादा डिप नहीं हुआ होता है इनटू द मेडुला, वो ज़्यादा होता है प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन. देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ Henle छोटा होता है. मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा
एब्सेंट या हाईली रिड्यूस्ड होता है. इन अदर वर्ड्स वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एफेरेंट आर्ट्रियोल एफेरेंट आर्ट्रियोल की तरफ. एफेरेंट आर्ट्रियोल का रेडियस छोटा होता है एज कम्पेयर टू द एफेरेंट आर्ट्रियोल. रेडियस छोटा होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास जो फिल्ट्रेट होता है ब्लड होता है वो थोड़ा सा ठहरता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रेशर जनरेट करता है. छोटे रेडियस की वजह से ये प्रेशर, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कहते हैं, वो उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है यहाँ से, फिर स्लिट पोर्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. इफेरेंट आर्ट्रियोल का रेडियस होता है छोटा एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल. A hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has the descending limb, ascending limb. The ascending limb continues as a highly coiled tubular region called as the distal convoluted. The distal convoluted tubule of many nephrons open into the straight tube called the collecting duct. Very important. Many of which converge open into the renal pelvis through the medullary pyramids in the calyces. The malformation corpuscle PCT and DCT are present in the cortical region of the kidney, whereas loop of Henle dips in the middle. In majority of the nephrons, loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called the cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is large, very long, and runs deep into the medulla. These nephrons are called as juxtamedullary nephrons. The efferent arteriole emerging from the glomerulus form a very fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. Vasa recta is highly reduced or absent in cortical nephrons. Is absent or highly reduced in cortical nephrons. Is absent or highly reduced in cortical nephrons. ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. पहले हमने पढ़ा किडनीज में क्या क्या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है. फिर हमने उसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा, किडनी कहाँ पे लोकेशन होती है, उसकी कहाँ पे लोकेशन होती है, उसका साइज़ कितना होता है किडनी के अंदर. फिर हम गए, फिर हमने पढ़ा हाइलम, उसके बाद हमने पढ़ा रिनल पेल्विस, उसके बाद कैलाइसिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद मेडुला, उसके बाद मेडुलरी पायरेमिड्स. फिर हमने पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में. फिर ये सारा जो स्ट्रक्चर है, सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन में आते हैं दो चीज़, एक आता है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा आता है रिनल ट्यूब्यूल. ग्लोमेरुलस में ज़्यादा नहीं आता एफेरेंट आर्टेरियल. एफेरेंट आर्टेरियल जो ही ग्लोमेरुलस से जो इफेरेंट आर्टेरियल निकलती है वही बनाते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. जो बोमेन्स कैप्सूल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिनल ट्यूब्यूल. जो रिनल ट्यूब्यूल जो है फिर उससे से निकलता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल. फिर उससे निकलता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोअर फेनल. फिर असेंडिंग लिम्ब से निकलता है प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वर्टिब्यूल. फिर डिस्टल कन्वर्टिब्यूल बहुत सारे डिस्टल कन्वर्टिब्यूल एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं. फिर हमने पढ़ा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स किन्हें कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किन्हें कहते हैं. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. उसके बाद हमने पढ़ा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसे कहते हैं. वासा रेक्टा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वासा रेक्टा किन में एब्सेंट होता है और हाईली रिड्यूस्ड दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में हाईली एब्सेंट, हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट होता है. सिंपली यूरिन फॉर्मेशन वाज 3 स्टेप्स. Urine formation involves three main processes: glomerular filtration, reabsorption, and secretion. Glomerular filtration, reabsorption, and secretion that takes place in different parts of nephron. अलग अलग part of nephron को अलग अलग function दी जाती है. अलग अलग part glomerular filtration अलग part को होती है function. Reabsorption and secretion. The first step in the urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called as glomerular filtration. जो हमने glomerulus पढ़ा, that is the part of nephron, उससे होती है हमें ultra filtration or we can say that filtration of blood. On an average, 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered by kidneys per minute, which constitutes 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in 1 minute. कार्डिक आउटपुट हमारा होता है रफली 5000 ml, 5 लीटर से 5000 ml. कार्डिक आउटपुट हमारा होता है, कार्डिक आउटपुट किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड कितना, ईच वेंट्रिकल 5000 लीटर, 5000 ml और 5 लीटर्स. उसमें से पांचवा हिस्सा खाली किडनी फिल्टर करती है in 1 minute. That is 1/5 of the cardiac output. 1/5 of the cardiac output is filtered by the kidney in 1 minute. 1/5 of the cardiac output is filtered by the kidney in 1 minute. That is 1100 to 1200 of the
blood filtered by the kidney in 1 minute. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of, जो हमने यहाँ पढ़ा glomerular capillary blood pressure किसकी वजह से होता है एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ द इफेरेंट आर्टरी की वजह से जो क्रिएट होता है glomerular capillary. इट causes द filtration of the blood through three layers. जैसे रेस्पिरेशन में 3 लेयर्स से होती है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, इसी तरह फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड भी होती है थ्रू द 3 लेयर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes filtration of the blood through 3 layers, that is endothelium of glomerular blood vessel. glomerular blood vessel से ब्लड निकल, इट्स अ वेसल, इट्स अ ब्लड वेसल, उसका एंडोथीलियम. बोमेन्स कैप्सूल का एपिथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ वेसल, endothelium of vessel, epithelium of Bowman's capsule. इनके दरमियान होता है बेसमेंट सबस्टेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन कह सकते हैं या बेसमेंट सबस्टेंस. एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी या ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एंडोथीलियम. epithelium of the Bowman's capsule, epithelium of the Bowman's capsule, and the basement membrane between these 2 layers. The epithelial cells, जो epithelial cells होते हैं Bowman's capsule की, उनको कहते हैं podocytes, which are arranged in integrate manner so as to leave minute pores called as filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass into the lumen of the Bowman's capsule. Blood is filtered so finely through the slit pores or the filtration pores that almost all the constituents of the plasma except the proteins are released into the lumen of the Bowman's capsule. That's why it's called as ultrafiltration. The first step in the urine formation is the filtration of the blood. The filtration of the blood is carried out by the glomerular, therefore it is also called as glomerular filtration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered out by kidney in 1 minute, which is roughly 1/5 of the cardiac output. 1/5 of cardiac output. The glomerular capillary blood pressure causes the filtration of the blood through 3 layers: endothelium of the glomerular blood vessel, epithelium of the Bowman's capsule, and the basement membrane between these 2 layers. The epithelial cells of the Bowman's capsule are called as podocytes, which are arranged in integrate manner to form the filtration slits or slit pores. The blood is pumped, but the blood is filtered so finely through these pores that almost all the constituents of the plasma except the proteins are filtered into the are released into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is also called as ultrafiltration. Endothelium of vessel, basement substance, epithelium, podocytes, filtration of the blood. This carried by the gland filtration on average 1112 blood is filtered out by kidney, which is considered roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle. The glomerular capillary blood pressure causes the filtration of blood through 3 layers: endothelium of the glomerular blood vessel, the epithelium of the Bowman's capsule, and the basement. The epithelial cells of Bowman's capsule are called as podocytes and arranged in integrate manner. Podocytes are in 2 layers. So actually, some minute spaces called as the filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these pores that almost all constituents of the plasma, except the proteins, pass into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is also called as all the constituents of the plasma, except the proteins, pass into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is also called as the ultrafiltration. The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called as glomerular filtration rate. GFR. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute or 180 liters per day. Amount of filtrate कितना बनता है एक किडनी बाय द किडनीज, दोनों किडनीज का एक मिनट में दोनों किडनीज कितना फिल्ट्रेट बनाती है, उसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. एक इंडिविजुअल में ऑन एन एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 पर मिनट, 125 ml per or 180 liters per day. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate को रेगुलेट या मेंटेन करने के लिए किडनीज के पास एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है. One such mechanism is the juxtaglomerular apparatus, GGA. GGA is a special sensitive region formed by the cellular modifications in the DCT and the afferent arteriole. It is DCT plus afferent arteriole के दरमियान बनता है sensitive region बनता है JGA, juxtaglomerular apparatus. The kidneys have inbuilt mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus is a sensitive region formed by
sensitive region formed by the cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. A fall in the glomerular filtration rate can activate the JG cells, that the juxtaglomerular cells, to release renin. यहाँ पे सिंगल एन RENIN जो इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में जो रेनिन पाया जाता है उसकी स्पेलिंग है RENNIN। यहाँ पे जो रेनिन है उसकी स्पेलिंग है RENIN। एग्जामिनर यहाँ पे हमको फंसा सकता है। सिंगल एन है यहाँ पे, सिंगल एन, वेरी इंपॉर्टेंट। The kidneys have inbuilt mechanism which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. A fall in GFR can activate the JG cells which releases renin, which stimulates the renin. Renin can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is the juxtaglomerular apparatus, which is formed by the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the site of their at the location of their contact. A fall in the GFR can stimulate the JG cells. A fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. Which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal and thereby GFR back to normal and thereby GFR back to normal. A comparison of the volume of the filtrate formula. हम एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर्स, और एक दिन में हम कितना यूरिन करते हैं 1.5 लीटर्स, विच इज़ सजेस्ट 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो होता है रीअब्जॉर्ब बाय द रिनल ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्ब होता है रिनल ट्यूब्यूल। कंपेरिजन अब टोटल जो फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में दैट इज़ 180 लीटर्स, टोटल जो यूरिन करते हैं हम एक दिन में दैट इज़ 1.5 लीटर्स। इसका मतलब 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक, 99.99% of the filtrate is reabsorbed back by the renal tubules. This process is called reabsorption. इस process को कहते हैं हम reabsorption. The tubular epithelial cells in different segments of the nephron perform this either by active or passive mechanism. जो reabsorption होती है या तो ये active mechanism से होगी या passive mechanism से होगी. For example, glucose, अमाइनो एसिड या सोडियम पॉजिटिव एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट और एब्जॉर्ब एक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव पाई सोडियम पोटेशियम पंप याद, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वैसे ही याद रहेगा। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इन द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, वेयर एज नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो होते हैं एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो ऑकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ये याद रखना है, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में ही होती है। कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम, अगर 180 लीटर्स का वॉल्यूम बनता है एक दिन में, उसमें से खाली 1.5 लीटर हम यूरिन करते हैं, इसका मतलब 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। डिफरेंट जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो रीअब्सॉर्ब करते हैं डिफरेंटली, या पैसिव मैकेनिज्म से या एक्टिव मैकेनिज्म से। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम पॉजिटिव आयंस को हम एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं एंड नाइट्रोजन वेस्ट को हम पैसिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं। इसी तरह वाटर भी पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स, हमने 2 स्टेप्स पढ़े, दैट इज हमने पहला पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा पढ़ा हमने रीअब्सॉर्प्शन। अब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, रिनल ट्यूबुल्स के जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो सिक्रेट करते हैं सबस्टेंस लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में कुछ सबस्टेंस सिक्रेट करते हैं लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड अमोनिया, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। किस लिए करते हैं सिक्रेट? ताकि जो जो हमारी आयनिक और फ्लूइड बैलेंस है वो आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम वो बैलेंस रहे, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए हमारी जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कुछ सबस्टेंसेस इनटू द फिल्ट्रेट during the urine formation like protons, H positive, potassium ions, K positive and ammonium ions. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps, ये याद रखना है, tubular formation is very important for osmoregulation, for maintenance of the ionic balance. आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। द अमाउंट कितना फिल्ट्रेट बनता है एक मिनट में एक उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट इज़ 125 ml पर मिनट एंड एक दिन में बनता है 180 लीटर्स पर डे। The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called as glomerular filtration rate, and healthy individual is 125 ml per minute or 180 liters per day. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate. One such mechanism is the juxtaglomerular apparatus. GG is a special region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole. Distal convoluted tubule and the afferent arteriole, and afferent arteriole, distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. FR and GFR can activate GG cells to release renin or is single NIN.
It's not double N, it's N-I-N, R-E-N-I-N, 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 which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. A comparison of the volume of the filtrate, that is 180 liters per day, with that of the urine release 1.5 liters, such that 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. This is called reabsorption. The tubular epithelial cells एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से reabsorb करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम पॉजिटिव को एक्टिवली reabsorb करते हैं, नाइट्रोजन को पैसिवली reabsorb करते हैं, वाटर को भी पैसिवली reabsorb करते हैं इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन. इसी तरह यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं H पॉजिटिव, K पॉजिटिव अमोनिया टू मेंटेन द ionic and the acid base balance of the body fluids, to maintain the ionic and the acid base. This was the urine formation. urine formation में total 3 steps होते हैं. glomerular filtration. glomerular filtration कितना होता है? Cost to 1100 1200, 1/5 of the total cardiac output होता है filter in 1 minute. फिर पढ़ा हमने ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर से जो फिल्ट्रेशन होती है थ्रू 3 लेयर्स होती है. एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ द बोमेनस कैप्सूल एंड द बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम. फिर पढ़ा एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेनस कैप्सूल को पोडोसाइट्स कहते हैं, जो इंटीग्रेट स्लिट पोर्स या बनाते हैं बोमेनस कैप्सूल में, जहाँ से फिल्ट्रेशन इतनी अच्छी होती है कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स जो वो पास होते हैं इन द लेमन ऑफ बोमेनस कैप्सूल, इसीलिए उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा किडनीज के बाद एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द GFR, glomerular filtration rate, जिसको हम कहते हैं जक्सा ग्लोमेरुलर apparatus, जो बनता है between the afferent arteriole and the distal convoluted tubule. Afferent arteriole and the distal convoluted tubule at the point of their contact जो secrete करते हैं रिन आरी सिंगल NIN, जो इंक्रीज करती है इंटर इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से GFR नॉर्मल होता है. जो टोटल फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में दैट इज़ 180 लीटर. जो हम यूरिन करते हैं एक दिन में दैट इज़ 1.5 लीटर्स. 99% ऑफ द फिल्ट्रेट होता है reabsorb इन द डिफरेंट पार्ट्स. कुछ एक्टिवली reabsorb होते हैं, कुछ पैसिवली. ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम पॉजिटिव आयंस एक्टिवली reabsorb होते हैं. इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्टेज पैसिवली reabsorb होते हैं, वाटर भी पैसिवली reabsorb होता है इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन. इसके अलावा जो लास्ट स्टेप होता है इन द यूरिन फॉर्मेशन, ये तीनों स्टेप्स एक्चुअली साइमल्टेनियसली होते हैं. जो लास्ट स्टेप यहाँ पे हमने पढ़ा दैट इज सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. सिक्रीट होते हैं लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव अमोनिया सिक्रीट होते हैं, जो हेल्प करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. इट्स कंप्लीट. फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल. अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ट्यूबुल्स की. एक फंक्शन सारे ट्यूबुल्स की कॉमन है. क्या? सिक्रीशन मेंटेनेंस ऑफ पीएच. ये सारी ट्यूबुल्स की है ये फंक्शन. सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव, K पॉजिटिव अमोनिया एंड द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, दैट इज एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. proximal convoluted tubule. PCT is lined by पहला very important point. PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium. Simple cuboidal brush border epithelium. Simple cuboidal brush border epithelium, which increase the surface area for reabsorption. Nearly all essential nutrients, जो भी essential nutrients होते हैं वो पहले ही reabsorb होते हैं. That is in the proximal convoluted tubule. Nearly all the essential nutrients, 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed. हमने पहले ही पढ़ा water is reabsorbed in the initial segments. That is PCT में water reabsorb होगा. PCT में water absorb. Nearly all the essential nutrients, 70 to 80% of electrolytes, 70 to 80% of the electrolytes and the water is absorbed by the segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance by by selective secretion of the H positive, K positive ammonia and the filtered by the absorption of bicarbonate from it. पहले ही बोला मैंने, हर किसी ट्यूबुल की फंक्शन है वो सिक्रेट करता है सेलेक्टिव सिक्रेशन H पॉजिटिव, K पॉजिटिव अमोनिया, जिससे वो एसिड बेस बैलेंस है pH मेंटेन करने में मदद करता है. सेकंड वन, हेनरीज लूप. reabsorption is minimum in its ascending limb. ascending limb में reabsorption minimum होती है. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लूप ऑफ हैनल के पास दो लिम्स होते हैं. एक तो होता है डिसेंडिंग लिम, पहले डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम. असेंडिंग लिम में वाटर ऊपर जाएगा, उसमें reabsorption उतनी नहीं होगी. देयरफॉर reabsorption is minimum in the ascending limb of loop of Henle. Reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a very important role in maintaining the high osmolarity of the medullary interstitial fluid. The descending limb of the loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrate is the filtrate. This concentrate is permeable to water and almost impermeable to electrolytes. This concentrate is the filtrate as it moves down. The ascending limb of is impermeable to water but permeable, allows to transfer the electrolytes or actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate passes upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. Due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. Henry's loop में क्या रखना है यार? Henry's loop ascending limb होता है
reabsorption minimum. हेनलीज लूप में असेंडिंग लिम्ब में reabsorption minimum होती है. और मैंने ये ट्रिक याद रखी है. असेंडिंग हेनलीज लूप में असेंडिंग लिम्ब में reabsorption minimum होती है. हेनलीज लूप में असेंडिंग लिम्ब में reabsorption minimum होती है. Henry's loop ascending limb, descending limb, ascending limb, descending limb is permeable to water but impermeable to electrolyte. This concentrates the filter as it moves down और फिर वो dilute हो जाता है due to the flow extension. We are opposite of my याद. Descending limb is permeable to water and impermeable to ज़्यादा बाहर निकलता है एंड जो फिल्टर वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है एज इट मूव्स डाउन. Distal conditional reabsorption of Na positive and water takes place in this segment. Conditional reabsorption, aldosterone पढ़ा होगा. aldosterone acts ADH acts on this DCT, वहाँ से फिर absorb कराता है वो Na positive and water. Conditional reabsorption Na positive and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of H positive and K positive ions and ammonia H positive K positive ammonia to maintain pH and the sodium potassium balance. ये तो पढ़ा ही पढ़े हर किसी ट्यूब्यूल. हेनलीज लूप का नहीं होता है सेलेक्टिव सिक्रेशन. कंट्रीब्यूल में पढ़ा, डिस्टल कंट्रीब्यूल में पढ़ा, करेक्शन डक्ट में भी पढ़ेगी सिलेक्ट सिक्रेशन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है डिस्टल कंट्रीब्यूल का दैट इज कंडीशनल reabsorption of the Na positive and water takes place in the segment. DCT is also capable of reabsorption bicarbonate and the select secretion of H positive, K positive and ammonia in the body fluids to maintain the pH and the acid base balance. Correction duct. This long duct extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Cortex of the kidney से extend होके inner parts of medulla में extend होती है. Cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amounts of the water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. Large amount of water could be reabsorbed from this region. इस region से reabsorb किया जाता है. Large amount of water निकलता है इससे बाहर. That is large amount of water can be reabsorbed from this duct to produce a concentrated urine. To produce a क्योंकि हमारी kidney को एक property एक characteristic feature है. It can produce 4 times concentrated urine than the initial filtrate form. Our kidneys can produce 4 times concentrated urine than the initial filtrate form. Concentrated urine. Large amount of water can be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment allows passage of small amounts of urea into the medullary. This segment allows a small passage of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity, to maintain high osmolarity. It also plays in maintenance of the by the selective secretion. ये तो पहले ही पढ़ा मैंने. Selective secretion of H positive, K positive and the ammonia होती है. Selective secretion which maintains तो पढ़ाई पहले ही पढ़ा हमने. Collection duct में क्या याद रखना है? It extends from the cortex to the medulla. Large amount of water can be reabsorbed from the segment to produce a concentrated urine. It allows the small passage of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also helps in maintenance of the acid base balance through selective secretion of H positive, K positive ammonia. In the cortex of the coordinate in the parts of the middle, large amounts of the water could be reabsorbed from to produce a concentrated urine. This allows passage of small amount of the urea in the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It plays an important role in the maintenance of the pH and the ionic balance of the body blood by the selective secretion of H positive, K positive, and ion. Proximal contribute nearly all the essential nutrients, 70 to 80% electrolytes in the water absorbed by the segment. It is lined by the simple cuboidal brush border epithelium. Nearly all the essential nutrients, 70-80% of the electrolytes and the water as well as segment. PCT helps maintain the pH and the ion balance for the selective secretion of the H positive, K positive, and ammonia and the reabsorption of the bicarbonate ions from it. And the reabsorption is minimum in its ascending limb. Reabsorption is minimum in its ascending. However, this represents high osmolarity of the high osmolarity. The ascending of the is permeable to water but impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down the ascending limb is impermeable to water but allows the transfer of the electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate passes up, it gets diluted due to the passage of the electrolytes to the medullary fluid. Distal conditional reabsorption of the Na positive and the water takes place in the segment also capable of selection of the पढ़ाई पहले इसमें important नहीं है खाली conditional reabsorption होती है. ये हुआ complete हमारे functional tubules. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and the Henry's loop. Collection duct is not a part of a single nephron. Yeah, collection duct is not a part of single nephron. Not feeling good. Collection duct is not a part of a single nephron.
किस तरह हमें कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए जो किडनी मेड्यूला होता है किडनी का, उसमें हाई ऑस्मोलैरिटी की ज़रूरत है। कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल्स होते हैं, ऑस्मोलैरिटी होते हैं इन द कॉर्टेक्स एंड अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल्स इन द मेडुला। हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है टूवर्ड्स द मेडुला, जिसकी वजह से हमें कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। एज हेनलीज लूप करेक्ट भी take part करता है in the formation of the concentrated urine. Mammals have the ability to produce a concentrated urine about 4 times. ये आगे लिखा है, यहाँ पर लिखा है शायद, यहाँ पर लिखा है human kidneys can produce the nearly 4 times concentrated than the initial filtrate format. खत्म ही करेंगे आज चैप्टर इंशाल्लाह. Mechanism of the concentration of the filtrate. Mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and the vasa recta, Henle's loop or vasa recta, plays a significant role in this. The flow of the filtrate in the two limbs of the Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current. The flow of the blood through the two limbs of the vasa recta is also in opposite direction and is also in a counter current mechanism. Therefore, Henle's loop and the vasa recta plays an important role in the formation of the concentrated urine. Henle's loop के जो 2 लिम्स होते हैं, इसी तरह vasa recta के भी 2 लिम्स होते हैं. उन 2 लिम्स में फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है अपोजिट, जिसको हम काउंटर करंट कहते हैं. काउंटर करंट कहते हैं अपोजिट फ्लो. काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट फ्लो. द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, इसके अलावा जो हैंडल लूप होता है, हमें पता है वासा रेक्टा इट इज़ अ माइन्यूट वेसल ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. इट इज़ अराउंड विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द Henle's loop. The proximity between the Henle's loop and the vasa recta as well as the counter current in them. दो चीज़ें, एक तो प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस. द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द Henle's loop and the vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining the increasing osmolarity towards the medullary interstitium, that is from 300 milliosmoles in the cortex and to about 1200 milliosmoles in the medulla. ये पहले ही पढ़ा. 300 milliosmoles to the milliosmoles, not osmoles, in the osmoles in the medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मदद करते हैं टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. पहली चीज़ Henle's loop, दूसरी चीज़ वासा रेक्टा, तीसरी चीज़ NaCl, चौथी चीज़ यूरिया. Proximity, the proximity as well as the counter current in the two limbs of the vasa recta as well as the two limbs of the Henle's loop helps in maintaining a high osmolarity towards the medulla, from 300 milliosmoles in the cortex to about 1200 milliosmoles in the medulla. NaCl and urea plays a significant role in this. NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. It is descending limb of Henle's loop. It is ascending limb of Henle's loop. इसके यहाँ से है. It is descending limb of vasa recta. It is ascending limb of vasa recta. NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. Ascending limb of loop of Henle, यहाँ से निकलता है NaCl, जो यहाँ जाता है. NaCl is transported by the ascending limb of lobe of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the, फिर यही NaCl वापस interstitium में जाता है through the ascending limb of vasa recta. Into the interstitium through the, ये यहाँ से फिर NaCl वापस जाता है into the interstitium. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop. इसी तरह ascending limb of Henle's loop में जाता है कौन? यूरिया. फिर वो यूरिया यहाँ से निकल के कलेक्टिंग डक्ट से वापस जाता है इनटू द इंटरस्टिशियम. वो Henle's loop, दोनों चीज़ें Henle's loop से ascending limb of Henle's loop से स्टार्ट होती है. NaCl is exchanged by the Henle's is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta and is returned back to the interstitium through the ascending limb of vasa recta. Similarly, urea is exchanged by the ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule या collecting duct. The above described transport of the substance is facilitated by ये याद रखना है. NaCl and urea. The NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta, which is then transported back to the interstitium through the ascending limb of vasa recta. Done. Similarly, NaCl is
exchanged with the ascending loop of Henle, limb of Henle, which is transported back to the interstitium through the collecting duct. The above described transport of substances facilitated by the special agent of the Henle is called a countercurrent mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. That is high osmolarity होती है इनसे maintain into the cortex, into the medulla, kidney medulla. That is from 300 milliosmoles in the cortex to about 1200 milliosmoles into the medulla. Presence of such gradients helps in easy passage of the water from the collecting tubule. Collecting tubule से हम water को निकालना है बाहर, ताकि जो हमारा यूरिन बने वो बने concentrated. High osmolarity of the medullary interstitium is essential for the easy passage of water from the collecting tubule to the medullary interstitium. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. Counter current mechanism में क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म, द फ्लो काउंटर करंट कहते हैं हम अपोजिट फ्लो को. हेनलीज लूप के जो 2 लिम्स होते हैं उनमें होता है फ्लो फिल्ट्रेट. इसी तरह वासा रेक्टा के जो 2 लिम्स होते हैं उनमें फ्लो होता है ब्लड. उनमें फ्लो क्या होता है? ब्लड in the opposite direction. That is why they are in counter current. Also they are in close proximity with each other. These two factors, the counter current as well as the close proximity, these two factors help us in creating high osmolarity in the medullary interstitium. In addition to these two, NaCl and urea plays a significant role in this. NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta and is transported back to the medullary interstitium through the ascending limb of vasa recta. Done. Similarly, urea is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the medullary interstitium by the collecting tubule. These movements helps in maintaining the high osmolarity of the medullary interstitium. The high osmolarity of the medullary interstitium helps in easy passage of water from the collecting tubule, which in turn helps in creating a concentrated urine. Human kidneys have an ability to produce 4 times concentrated urine than the initial filtrate form. That's amazing. थोड़ा सा highlight करेंगे रंग वंग का भी. The ability to produce a concentrated urine. Mammals have the ability to produce a concentrated urine in the Henle loop, and the vasculature plays a significant role in the flow of the filter in the 2 limbs of the Henle loop in the opposite direction, and thus forms a countercurrent. The flow of the blood through the 2 limbs of the vasculature is also in countercurrent mechanism. The proximity between the Henle loop and the vasculature, as well as the countercurrent, helps in maintaining the increasing osmolarity towards the is from 300 milliosmoles to about 1200 milliosmoles in the medulla, 1200 milliosmoles into the medulla. The gradient is mainly caused by the NaCl and the urea. NaCl is transported by the ascending limb of the Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned back to the interstitium by the ascending limb of vasa recta. Similarly, small amounts of urea and a thin segment of the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport substance facilitated by this called as a countercurrent mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. The presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate or urine. Human kidneys can produce 4 times concentrated urine than the initial filtrate form. 4 times concentrated human kidneys can form the 4 times concentrated urine than the initial filtrate form. पहले जो NaCl आता है इस इन्वॉल्व होने से डिसइन्वॉल्व हो जाता है, फिर NaCl यहाँ से बाहर जाता है, NaCl यहाँ से बाहर जाता है. फिर यूरिया इस तरह यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिखाएंगे ताकि वो याद रहे. यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने पढ़ा. जो कि GFR होता है वो होता है इनबिल्ट मैकेनिज्म रेगुलेट. जो जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटर JG सेल्स स्टिमुलेट होते हैं वो रिलीज करते हैं रेनिन, फिर रेनिन करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज, जिसकी वजह से GFR नॉर्मल होता है. फिर से अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से मतलब फैक्टर्स है या कौन कौन से और ऑर्गन्स है जो रेगुलेट करते हैं किडनी फंक्शन को. द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस JG एंड हार्ट भी करता है. अमेजिंग.
हार्ट इज इमेजिन कि अपना फंक्शन खुद करता है. इसके अलावा किडनी का फंक्शन भी कंट्रोल करता है हार्ट. अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. हाइपोथैलेमस, JGA जो हमने पढ़ा पहले ही, दैट इज रेनिन. JGA हाइपोथैलेमस, JGA हाइपोथैलेमस, JGA juxtaglomerular apparatus and to a certain extent the heart. Osmoreceptors, osmoreceptors are those receptors that is sensitive to the water जो sensitive होते हैं उसको उनको कहते हैं osmoreceptors. In the body are activated by the change in the blood volume, blood fluid volume or the ionic concentration. या तो ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा या ब्लड फ्लूइड मतलब को वाटर कंसंट्रेशन अगर चेंज गया, या अगर ब्लड वॉल्यूम चेंज या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम चेंज या आयनिक कंसंट्रेशन अगर चेंज होंगी तो उससे हमारे ऑस्मोरिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और द ionic concentration. An excessive loss of blood fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release the ADH or the vasopressin from the neurohypophysis. Neurohypophysis, it is actually a pituitary gland का posterior part वही. ADH facilitates water absorption from the later that DCT जो हमने पढ़ा था, conditionally absorption होती है from the DCT, thereby preventing diuresis. An increase in the blood fluid volume can switch off the receptors and suppress the ADH release to complete the feedback. ADH can affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessels. This causes an increase in blood pressure, and increase in the blood pressure can increase the glomerular blood flow and therefore the GFR. GFR देखो, अगर हमें ब्लड लॉस होगा, GFR डिक्रीज होगा, उसकी वजह से जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट होंगे, वो सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस से निकलेगा हार्मोन, फिर वो करेगा एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा ADH और एंटी डायरेटिक हार्मोन सॉरी, ADH का फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन, आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन. इट एक्ट्स ऑन द DCT एंड काज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिससे GFR का बैक टू नॉर्मल होगा. इसके अलावा ADH की एक और फंक्शन होती है, इट इज़ कंस्ट्रिक्टरी फंक्शन. ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है जिसकी वजह से GFR इंक्रीज हो जाता है. गो इसका मतलब ये हुआ जो ADH होता है इट इंक्रीजेज GFR को इंक्रीज करता है. अगर हमारा GFR अब से ज़्यादा हो गया फिर नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस भेजता है सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को, अब ADH ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर रहा है, इसी तरह हमारा फीडबैक जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो फर्स्ट जो ऑर्गन है जो रेगुलेट करता है, या हम कह सकते हैं ग्लैंड या मोस्ट ऑफ ग्लैंड वट, जो मेंटेन या रेगुलेट करता है किडनी फंक्शन, इट इज़ हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जाता है, फिर जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल, वहाँ से कंडीशनल एब्सॉर्प्शन होती है, जो GFR हमारा डिक्रीज़ हुआ था वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है. इसके अलावा GFR का इंक्रीज़ करने का एक और तरीका होता है ADH के पास, ये ब्लड वेसल्स के पास जाता है, उनको कंस्ट्रिक्ट करवाता है. जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, GFR इंक्रीज़ होगा. दो फंक्शंस के दो तरीक़ों से ADH GFR को इंक्रीज़ करा सकता है. सेकंड इज JGA. पहला था हाइपोथैलेमस कंप्लीटेड, सेकंड इज JGA, दैट इज juxtaglomerular apparatus. वो बनता है फ्रॉम द डिस्टल condylarticle and the afferent arteriole at the point of their contact. juxtaglomerular apparatus अगर GFR डिक्रीज होगा वो स्टिमुलेट करेंगे JG सेल्स को, JG सेल्स से निकलेगा रेनिन RE सिंगल NIN, फिर रेनिन करेगा GFR इंक्रीज बैक टू नॉर्मल. FR and GFR, blood flow pressure GFR can activate the G cell to release renin, which activates angiotensinogen in blood. यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है. एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में होते हैं, एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड. तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड बीइंग अ पावरफुल. एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है इसकी फंक्शन सिमिलर होती है ADH की. जैसे ADH वाजो कंस्ट्रक्ट करता है फिर GFR को इंक्रीज कराता है, इसी तरह एंजियोटेंसिन सेकंड भी पावरफुल वाजो कंस्ट्रक्टर होता है, इंक्रीजेस द GFR glomerular blood pressure and therefore GFR. Angiotensin second also activates the adrenal cortex to release the aldosterone causes reabsorption of the Na positive from the DCT. ये भी होती है conditional reabsorption from DCT and water from the DCT distal parts of the tubule. This also leads to an increase in the GFR. JG सेल्स जब GFR डिक्रीज होगा JG सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, वो सिक्रेट करेंगी रेनिन जाएगा ब्लड में वो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है इट्स अ पावरफुल वाज़ोकंस्ट्रिक्टर, इट कंस्ट्रक्ट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस द GFR. इसके अलावा ये जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, वहाँ से सिक्रेट कराता है एल्डोस्टेरोन जाता है DCT के पास, वहाँ से होती है कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द Na पॉजिटिव एंड वाटर, उसकी वजह से भी GFR इंक्रीज होता है. देयरफॉर एंजियोटेंसिन
सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड भी वाजो कंस्ट्रक्टर है, इसी तरह ADH भी वाजो कंस्ट्रक्टर है, दोनों ही इंक्रीज कराते हैं ब्लड फ्लो या GFR। ADH एक्ट करता है डिस्टल कनेक्टिवल एंड काज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसी तरह जो एंजियोटेंसिन सेकंड डायरेक्टली नहीं करता एक्ट, ये जाता है किसके पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, वहाँ से रिलीज कराता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जाता है फिर DCT के पास, DCT का वहाँ से कराता है रीअब्जॉर्प्शन सेकंड हो। दोनों ही वाजो कंस्ट्रक्टर होते हैं। इसके बाद हार्ट दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। हार्ट इनके अपोजिट होता है। अगर ब्लड फ्लो अब इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, कैन काज द रिलीज ऑफ द एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। एक फैक्टर निकलता है हार्ट से जो वाजो डायलेटर होता है, जो वेसल्स को डायलेट करता है और GFR को डिक्रीज कराता है। काज वाजो डायलेशन एंड देयरफॉर डिक्रीज ANF और एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर एक्ट्स ऑन ए चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट on the renin-angiotensin mechanism. ANF mechanism therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism, 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 as a check on the renin-angiotensin mechanism. ADH is vasoconstrictor, AD vasoconstrictor, angiotensin is vasoconstrictor, ANF is a vasodilator. तीन hypothalamus, JG and blood flow volume and ionic concentration and cellular blood from receptors antidiuretic hormone or the vasopressin. Neurohypoplastic ADH facilitates water absorption from the nerves and increases ADH completes feedback also affected by what's constructive effect on the blood vessels. Enable GFR. The GGA cells have complex regulatory role. GGA cells का complex regulatory role, singular role, complex regulatory fall in GFR activities which can be the angiotensin into angiotensin first and then angiotensin second. Angiotensin second being a powerful vasoconstrictor increases the GF glomerular blood pressure, increases the glomerular blood pressure and thereby the GFR. Angiotensin second also activates the adrenal cortex to release the aldosterone. Aldosterone causes the reabsorption of any positive and the water from the parts of the tubule. This leads to an increase in the GFR. Increase in the blood flow to the artery of the heart causes the release of the atrial natriuretic factor ANF. ANF causes vasodilation direct from the blood cell, thereby decreases the blood pressure. ANF mechanism therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. ANF acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. ANF acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. It acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. It acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. ANF acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. Micturition. Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored until voluntary signal is given to the central nervous system. Central urination का middle part controls urination. गंदी चीज़ें उसी के पास होती है, urination, defecation, vomiting सारी वही कंट्रोल करता है मिडुला पार्ट. Micturition मतलब जब यूरिन प्रोड्यूस होता है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर किया जाता है जब तक हमारे पास वॉलंटरी सिग्नल नहीं आती है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर हम मिक्चुरेट करते हैं, इस यूरिन को बाहर फेंकते हैं, जिसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं. The signal is initiated by stretching the urinary bladder as it gets filled with urine in response to stresses on the walls of the bladder. Signal is passed on to the motor message. जैसे कि आप सब जब यूरिनरी ब्लैडर में हमें यूरिन पहुंचता है, वहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रेच हो जाती हैं. स्ट्रेच होने की वजह से फिर वो सिग्नल्स भेजते हैं CNS वापस वो मोटर सिग्नल्स भेजता है कि वो यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है उसको रिलैक्स करवाइए, अपने जो यूरिन जो स्टोर किया है अभी तक उसको बाहर भेजिए, उसको बाहर जाना है, उसको आज़ाद कीजिए. Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder when stored signal given to the central nervous system. The signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. In response, the stretch receptors on the walls of the bladder send signals to the CNS. The CNS passes on the motor messages. The CNS passes on to the motor messages to initiate the contraction of the smooth. Contraction of urination की वजह से क्या होता है? Contraction of smooth muscles of urinary bladder as a relaxation of the urethral sphincter. मिक्चुरेशन के टाइम क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causes the release of urine. The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism is called as a micturition reflex. एक दिन में हम 1.5 लीटर यूरिन करते हैं, लेकिन एक दिन में यूरिया कितना होता है? यूरिन 1 to 1.5 liters per minute. The urine form is a light yellow colored water fluid which is slightly acidic. ये याद रखना है, it is slightly acidic and has a characteristic odor is a light yellow colored very important, सबसे important है, it is slightly acidic. इसका pH जो होता है यूरिन का that is about around 6. स्लाइटली एसिडिक नेचर, हमारा जो यूरिन होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. हम एसिड भी फेंकते हैं, वाह 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 वाह, हम एसिड भी फेंकते हैं, हम रोज़ एसिड फेंकते हैं, हम रोज़ एसिड करते हैं, हम एसिड की फैक्टर, हम एसिड बनाते हैं, हम एसिड को फेंकते हैं. यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उसका पीएच होता है 6, स्लाइटली एसिडिक.
येलो कलर्ड, येलो कलर्ड वाटर होता है. On average 25 to 30 gram, it is not milligram, it is not microgram, it is direct gram of urea is excreted out per day. एक दिन में हम 25 to 30 gram of urea excrete करते हैं. Nearly 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. 1 to 1.5 liters of urine is excreted out per day. 180 liters of filtrate is produced per day. 99 reabsorption occurs per day. बहुत कुछ होता है दिन में. Various conditions can affect the characteristics of the urine. Analysis of the urine helps in clinical diagnosis of the metabolic disorders as well as the malfunctioning of the kidney. For example, presence of the glucose, glycosuria, ketonuria is the indicative of diabetes mellitus. Glycosuria and the glycosuria presence of the glucose bodies को कहते हैं glycosuria. इसी तरह ketonuria, glycosuria are the indicative of the diabetes mellitus are the indicative of the diabetes mellitus. जैसे sugar बनाना कष्ट पे. डायबिटीज़ मिलेट्स को कहते हैं हम शुगर कॉस्टर पेट. Diabetes mellitus in urine are indicative of the diabetes mellitus. Due to the contraction of most of the bladder and the simultaneous relaxation of the urethral sphincter causes the release of the urine. The process of the release of the urine is called maturation, and the neural mechanism causing mechanism causing it is called as the maturation reflex. An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. The urine form is a light yellow colored water fluid which is slightly acidic, that is about 6 होता है इसका pH slightly acidic, about 6 होता है इसका pH slightly acidic, and has a characteristic order. On an average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of the urine. The presence of the glucose, that is glycosuria, and the ketonuria are the indicative of the diabetes mellitus. Role of other organs in excretion. We excrete carbon dioxide, we excrete nitrogenous wastes even from mouth in the form of saliva. राज की बात, हम मुंह से भी एक्सक्रीशन करते हैं. Other than kidneys, lungs, liver and skin. Lungs, liver and skin help in the elimination of the excretory waste. Our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximately 200 ml in 1 minute. एक मिनट में 200 ml of carbon dioxide हम excrete करते हैं through mouth. Mouth से excretion होती है ना. And also significant quantities of water every day. Liver, the largest gland of our body, secretes bile-containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Liver से होते हैं biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately pass along with the digestive wastes. In the form of feces की form में जो excrete होते हैं biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs are excreted out through B. फिर है C, फिर है D, फिर है B मतलब गो biliverdin, फिर है C मतलब गो कोलेस्ट्रॉल, D मतलब डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, फिर D drugs, V vitamins are excreted through the liver. Our lungs remove large amount of the carbon dioxide, approximately 200 ml per minute, and also significant amount of the water every day. Liver the largest. Sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretion. Sweat produced by the sweat glands is water fluid containing NaCl. Small amounts of the urea. Small amount of urea, and then lactic acid, small amount of urea. Null. हमारी जो स्वेट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड, स्वेट के फॉर्म में हम तीन चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं. N फॉर NaCl, U for urea and L for lactic acid. NuL. Null, कुछ भी याद रखो. Sweat, null. NaCl, urea and the lactic acid. Though the primary function of the sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the wastes mentioned above. Main function जो sweat का होता है, it has a main function of producing cooling effect on the body surface. Thus it also helps in the excretion of NaCl, urea and the lactic acid from the body. NaCl, urea and the lactic acid. Small amounts of urea and the lactic acid, whatever. Though the primary function, it also helps in the removal of the sebaceous glands or sebum, eliminate certain substances like cetirols, hydrocarbons and waxes through sebum. Sebum की ट्रिक है विश, WSH, W for waxes, S for cetirols
and H for hydrocarbons. Wish. दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन. जो मेन फंक्शन होता है स्वेट का, दैट प्रोवाइडिंग अ कूलिंग सरफेस ऑन द बॉडी, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. इसी तरह सिबम का जो फंक्शन होता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन द बॉडी सरफेस, बट इट आल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ विश WSH वैक्सेस स्टेरॉल्स हाइड्रोकार्बन्स. स्वेट करता है रिलीज NUL NaCl यूरिया एंड लैक्टिक एसिड. NaCl यूरिया एंड लिवर करता है एक्सक्रीट BBC DD. B for bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, drugs and the vitamins from liver से secrete होते हैं. Last point. Do you know small amounts of nitrogenous wastes? Small amounts of nitrogenous wastes, very important. Small amounts of nitrogenous wastes could be eliminated through saliva too. Very important. Small amount of nitrogenous wastes could be eliminated through saliva too. saliva के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. जो आखिर में याद रखनी बात, WSH सिबम NUL स्वेट, याद रखना है. इसमें आ सकता है क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है. स्वेट में क्या क्या रिलीज करता है? NUL NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड स्वेट में. सिबम में याद रखना है WSH वैक्सेस स्टेरॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. खत्म. NaCl ये करता है स्वेट, मेन फंक्शन होता है उसका कूलिंग इफेक्ट, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग. यही याद रखना है. स्लेवा में भी. डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. disorders of the excretory system. Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in a blood, a condition called uremia. हमारे ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होगा बिकॉज ऑफ मालफंक्शन ऑफ किडनी, उसको कहेंगे यूरीमिया. इट्स अ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर. इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हीमोडायलिसिस से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी की किडनी खराब हो, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करती हो, उसमें क्या होता है, उसके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है. फिर उसके ब्लड में से हमको यूरिया बाहर निकालना है. कैसे निकालेंगे बाहर? हमको ब्लड को सेपरेट, ब्लड यहाँ पे ब्लड लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे लेना पड़ेगा एक प्योर फॉर्म जिसमें टोटली कोई एक्सक्रीट प्रोडक्ट ना हो, कोई यूरिया ना हो. फिर इस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में से यूरिया जाएगा फ्रॉम इट इज़ हाई कंसनट्रेशन टू इट इज़ लो कंसनट्रेशन. इसी को हीमोडायलिसिस कहते हैं. हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं हम, जो अनफिल्टर्ड ब्लड है फ्रॉम द पेशेंट उसको बाहर निकालते हैं. उसको डालते हैं हम किस में, डायलाइजिंग यूनिट में. डायलाइजिंग यूनिट जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, जो हमें फिल्टर करवाएगा ये ब्लड. ब्लड ड्रेन फ्रॉम द आर्टरी से हम ब्लड निकालते हैं, आर्टरी से हम ब्लड निकालते हैं. पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट. एडिंग, पहले हम एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन ऐड करेंगे ताकि ब्लड जो है कोगुलेट ना हो. अगर ये कोगुलेट हो जाएगा तो ये कैसे मूव करेगा थ्रू द सेलोफेन ट्यूब. And anticoagulant like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of the plasma except of the nitrogenous waste. Dialyzing fluid का same composition होता है as that of plasma except the nitrogenous waste. The porous cellophane tube of the tube allows the passage of the molecules based on the concentration gradient. As nitrogenous wastes are present in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back into a vein after adding an antiheparin, or we can say after adding an antiheparin to it, antiheparin to it. This method is boon for thousands of the uremic patients all over the world. Thousands of uremic patients all over the world, 25-30 grams of urea. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of the renal failures. Kidney failure, a functioning kidney is usually transplanted from a donor, preferably a close relative, to minimize its chance of relation by the immune system. Modern kidney को तो से renal calculate मतलब stone or the insoluble mass of crystallized salts, oxalates etc. form the kidney. Calculate कोशिश पर बनाना कहीं आसने calculate होते हैं insoluble mass of insoluble जो होते हैं insoluble form में, जो soluble नहीं होते हैं oxalates. ग्लोमेरुल नेफ जहाँ पे आएगा दैट इज इन्फ्लेमेशन. नेफ्राइटिस जहाँ पे भी आएगा बायोलॉजिकल टर्म फॉर इन्फ्लेमेशन इज नेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब को इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी. इन्फ्लेमेशन रिनल कैविटी मतलब को किडनी स्टोन्स. insoluble mass of crystallized cells, oxalates etc.
Malfunction of the kidneys can lead to the accumulation of the urea in the blood that's called as the uremia, which is highly harmful to kidney failure. Hemodialysis during the process of the hemorrhage, the blood from drained from the convenient artery is pumped into a dialyzing unit called as the artificial kidney. Blood drained from the convenient artery is pumped into a dialyzing unit after entering an anticoagulant, example heparin. The unit contains a coiled cellophane tube which is surrounded by a dialyzing fluid which has the same composition as that of plasma except for the nitrogenous wastes. Plasma except for the nitrogenous waste except for the nitrogen waste. The porous cellophane tube allows the passage of the molecules based on the concentration gradient. As the nitrogen wastes are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through the vein after adding an antiheparin to it. After adding an antiheparin, this method is known to thousands of the uremic patients all over the world. Our ultimate method that is simply kidney transplantation. Nerve cavity मधुको insult muscle crystallized oxalates nephrites मधुको inflammation of the glomeruli of kidney inflammation of glomeruli of kidney inflammation of glomeruli of kidney हमने चैप्टर कर लिया आज कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन